My name is Rohan from Hindustan Times. Let me first of all start by saying that I really enjoyed the film. I just watched it yesterday, and so these are as a big fan of yours, I wanted to ask you first. As someone who's been chronicling the evolution of Mumbai for so many years, what do you think has changed the most about the city, and what do you think are the things that haven't changed much? Well, the grace of the city remains. It's becoming more difficult for the city to be graceful, but it is still. It's a city that accepts us all and allows. It's one city which allows you to say those of us who come from smaller towns to change the screenplay of your life. I mean, you can be who you think you want to be. You can reimagine yourself. It's a city that gives you that possibility. And everybody sort of lived next to each other. The millionaire could be at a pav bhaji shop. I mean, that kind of camaraderie existed in the Mumbai that I came to and fell in love with. It's becoming more Hmm. separate. It's Okay. becoming, different classes live in different places. The bonhomie of the city of all coming together. A very rich man taking a train. It's unheard of now. So I think the Okay. ethos of the city itself needs to be, rethought and we need to re-imbibe it a bit. But otherwise, it still retains its grace. नवाज सर, आपको भी काफी साल हो गए हैं अब मुंबई में रहते हुए। आपको भी लगता है कि जब आप पहले आए थे, मे बी आपने ज्यादा ऐसे फ्रेश आइड एंथुजियाज्म था, और अब कुछ सालों बाद हैज द रियलिटी स्टार्टेड टू सेट इन कि द सिटी कैन बी काइंड टू अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन बहुत लोगों के लिए उनके सपने नाकाम भी हो सकते हैं। मोस्टली तो यही रहता है कि बहुत ही काइंड रहती है सिटी मुंबई शहर जो है, और किसी भी फील्ड में, नॉट इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में लोग आते हैं। अगर मुंबई में कोई अगर आके तरक्की नहीं कर सकता या काम नहीं कर सकता, फिर वो कहीं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक माहौल भी है, काम करने का एक माहौल है। तो आई थिंक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं। थोड़ा शुरू में स्ट्रगल ज़रूर होता है, बट कहते हैं ना कि पहले समंदर की जो लहरें पहले बाहर फेंकती है और जब लेती है तो फिर कम्प्लीटली आपको ले लेती है। तो वो है मुंबई का किसी भी फील्ड में। आई थिंक हज़ारों लाखों लोग आते हैं और हर फील्ड में काम करते हैं, नॉट इन एक्टिंग और या इंडस्ट्री, और सब बहुत लोगों की स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं यहाँ पे मुंबई में। और मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं है जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। सर, मैं ये कह रहा था कि फिल्म में ना मेरिट के बारे में बात की गई है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने स्किल के बेसिस पे सक्सेस नहीं पा पाते। मैं आपको मुझे पूछना था कि डू यू थिंक दैट देर आर पीपल इन योर फील्ड हु आर ऑल्सो मे बी नॉट टैलेंटेड बट दे आर वेरी सक्सेसफुल? बहुत लोग हैं जो मेरिट में नहीं आते। मतलब इसमें तो देखिए एग्ज़ाम तो होता नहीं इसमें, है ना? हाँ जी। तो मैं मेरिट का अंदाज़ा इसमें लगाया नहीं जा सकता। तो बहुत सारे लोग बिना टैलेंट के भी सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता खैर यहाँ पे। In the end of the film, there is Nasser sir's character talks about failure, how failure is important. So I want to ask you, sir, and Nawaz sir also, okay, why is it important to fail? It teaches you, I Hmm. mean, a character person, because, there is a whole Bollywood or a fake kind of story that everybody sees. But most of the time, you don't succeed, you fail. Success happens once, once in a while, you go to the edge and come back. It's like a footballer, a center forward. Most of his runs to the goal fail. Who Yeah. scores the most number of goals? The guy who's at the, who's at the right place at the right time. No, the guy who's at the right place all the time. Then sometimes the ball comes to him. It's not me who said it. It's a very great footballer called Gary Lineker. So I mean, that's the whole logic of it, right? So
That's what you. I mean, to fail is an honorable thing. To attempt is an honorable thing, and then to fail, you normally fail, and then if you go again and again, then once in a while it will work. Things will come together. It's even in cinema, right? Once in a while, the right actor, the right location, the right music, the right everything, the right story, the right location comes and it gels. And magic happens. Right? In most directors' lives, it happens 4-5 times in his career. Those that are geniuses, it will happen 10-12 times or 15 times in their career. But you'll make 30 films on a career 40 years. It'll happen sometime. Actually, failure, I can say it is you have to consider it as a teacher. Once you sulk down after a failure, you cannot go ahead. But success is always nice. But if you have a continuous success, then you won't be able to face a failure. So why failures come across our life? To learn, to become mature, to become to reason out. That's what I think a failure is. I have seen, and still I'm facing a lot of failures in my life, as in a career, everything. But I try to look into the failure, why I failed. See, I directed a few films, and none of them did well. But once, when I had a conversation with my wife, of course she's a psychologist, and we were discussing, and always I thought it should have been a success, but she told, no, there must be a reason why it failed. Maybe the content may be good, or the way we sold the film released in a wrong time, maybe like that. So I think we have to accept failures. If you reject failures, then you're gone. नवाज सर, आई वांट टू आस्क आपको कि कभी कभी आपको स्क्रिप्ट मिलती होगी, जैसे आई एम श्योर व्हेन यू गॉट सीरियस मैन का स्क्रिप्ट इंस्टिंक्टिवली लगता होगा कि हाँ ये विनर है, दिस इज अ गुड स्क्रिप्ट. बट कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आपको अंदर से लगता है कि पता नहीं कि ये चलेगी कि नहीं, मुझे अंदर से लगता है कि अच्छी नहीं है, बट आप करते हो नोइंग दैट यू माइट फेल. उन फिल्मों के बारे में मुझे आप बताओ कि व्हाट मेक्स यू से कि चलिए कर लेते हैं, देखा जाएगा. कि ये होता है, जैसे मैंने कई बार इंटरव्यू में बोला कि मैं डायरेक्टर पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है और उस नॉर्मल सी स्क्रिप्ट को भी डायरेक्टर स्पेशल बना सकता है, ठीक है. अगर बहुत ही ग्रेट स्क्रिप्ट है और एवरेज डायरेक्टर है, बिलो एवरेज डायरेक्टर है, तो उसका बिल्कुल मटिया मिट कर सकता है. तो मेरे लिए डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हाँ ऐसे भी होते हैं, जैसे फेलियर और वॉटेवर जो भी है, फेलियर होता है कि एक सक्सेस जो आपने सोचा है कि उसको एक स्टैंडर्ड देने की बात कर रहे हैं आप उसमें, लेकिन जा उसी सक्सेस की तरफ रहे हैं, लेकिन वो नहीं उसकी तरफ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं. वो आपका बनाया हुआ बार है जिसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें आप कभी अचीव होते हैं, कभी नहीं होते हैं, और बहुत बार आप अचीव कर लेते, बहुत बार नहीं करते. फेलियर मोस्टली, जैसे सुधीर सर ने और नासिर सर ने बताया था, बेस्ट एग्जांपल है. आई थिंक जैसे एडिसन थॉमस का भी था कि जब बल्ब बनाया उसने, तो उसने 95 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो हुए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट 95 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिससे उसको पता चला कि इन 95 एक्सपेरिमेंट से बल्ब नहीं बनता. सुधीर सर, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. आई वांट टू आस्क यू how do you think the common man is being treated by the country today in 2020 in this contemporary age? I think we have given up, in a sense, for the past 20 years now. Slowly, we have given up the keeping the common man at even the pretense. ऐसी एक pretense था. शायद आपने बहुत कभी भी ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन ऐसा कहते तो थे, अब तो कहना भी बंद कर दिया. वो जो बंदा चला माइग्रेंट वर्कर, और वो जो पैदल चला, उसको हम सब ने ही नकारा. जैसे सरकार की क्यों बात करें, हम सिर्फ सरकार को ही देखते रहते हैं, लेकिन हमने भी तो, हाँ, कौन निकला उसके, ज्यादातर तो लोग नहीं निकले उसके.
So लिप सर्विस जिसको कहते हैं कि कह दिया बड़ा दिल पसीज रहा है आपका, फील फॉर द person, but in actual terms, what this pandemic has taught us is how selfish we all are, in a sense, how isolated and separate we all are. थोड़ा सा ये, it is even taught, I mean, I wouldn't, it's not a criticism of the outside, of the government alone. It teaches you how, as human beings, we are and where we need to learn and go back. How we are all, in a sense, joined at the hip, no? How the world is joined. How if I look after myself, I look after you. We've seen those lessons, we need to relearn, I think. I mean, if we don't learn, I think the human race is doomed. I'm not talking about governments and whatever, those are simple things. It's you have to reflect. You have to look inside yourself. It's quite bad what you see. Awful. It's not pleasant. It is. So it has taught me to value friendships, to value friends, to value connections, to value the fact that to look after all those around you. When you look after them, I mean, it's a very very joint world, and Tamil Nadu and UP are connected, America, Brazil, India, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, everything is connected, right? So if we don't, I mean, if these competing nationalisms will be the end of us all, I think it's something that we need to think about. Thank you everyone for your time. I'm afraid that's all the time I have. All the best for the film. I enjoyed it a lot. Hope to see you soon. Bye bye. Thank you. थैंक यू रोहन। ना फॉलोअर्स तू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहरुख खान का औकात में रहे।